Good afternoon. Namaskar. Ladies and gentlemen, welcome to the flag and ceremony of NAVIKA Sagar Parikrama 2. A mission that is going to be written on the golden pages of the history of our country. We'd like to begin this evening as we're waiting for the arrival of our chief guest, the Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh, is due to arrive at 1700 hours. 1700 hours, 5 p.m. because I can see people from all three forces, so let me explain the time to you in different technical terms. I will ask you know it because you've gone around the world in your own style. So ladies and gentlemen, we expect the arrival of our chief guest, the Honorable Raksha Mantri of India, at 5 o'clock, which is about half an hour from now. In the meantime, we'd like to show you a few special short films that will give you a crisp summary of the preparation that went into this mission. The NAVIKA Sagar Parikrama 2 is the first time that 2 women naval officers have done a circumnavigation. Just the 2 of them. It's called a double-handed sailing mission. In sailing terms, double-handed means that the boat was being sailed by 2 crew members. The first NAVIKA Sagar Parikrama took place in 2017-2018 when 6 lady naval officers completed the circumnavigation. So let us begin by showing you that video about the days and weeks of preparation that went into this mission. And of course we know the names of the crew members: Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A. I'm really excited. We're well aware of all the difficulties we might face during the expedition. We are fully prepared. We have been training since almost 3 years for the circumnavigation. Upcoming voyage is going to be a challenging one, and I feel really excited and thrilled about it. Circumnavigation involves sailing around the world, starting and ending at the same port. Navigating through rough seas and storms of the Southern Ocean, we use only sails which harness the power of the wind. For a true circumnavigation, we must cross the equator twice, sail a distance of minimum 21,600 nautical miles, and pass via 3 significant capes: Cape Leuwin in Australia, Cape Horn, and the Cape of Good Hope. Everything has to be done by ourselves. You need to manage the boat, like put up the sails. It's very physically demanding and mentally demanding. Right from repairing of machineries and navigation, even cleaning, cooking, everything. In the middle of the sea, if anything goes wrong, in case we are far away from the land and we don't have any immediate support, I do have fear. It's very important that you have a right amount of fear so that you are safe and the boat is safe. You have to be mentally very strong to go through the extreme weather conditions, rough seas, storms, gale force winds. There's no teacher better than the sea. When you see the nature at its full force, which is something you cannot fight, so it just becomes an act of survival.
इस एक्सपेडिशन के लिए मैं अपनी तरफ से आप दोनों को कांग्रेचुलेट करता हूं। वैसे ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक्सपेडिशन है। आप सबके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है, यानी एक सेंस ऑफ प्राइड सबके अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर है। With the blessings of the whole nation, the Indian Navy's NAVIKA Sagar Parikrama 2 expedition by Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A on board INSV Tarini was flagged off by Admiral Dinesh K. Tripathi, the Chief of Naval Staff, from INS Mandavi in Goa on 2nd October 2024. Continuously 30 knots of wind blowing off Kannur, and the sea is completely lit up. It's so beautiful with bioluminescence. With 35 knots, the winds moved up. Dilna and Rupa crossed the equator on 16th October. While heading southwards, strong currents pushed them westwards. They crossed the Tropic of Capricorn on 27th October. Winds altered, favoring them to proceed to Fremantle. The sighting of the albatross is a sweet welcome into the temperate zone. Dilna and Rupa were honoured at the Parliament of Western Australia for their significant achievement of sailing around the world on board INSV Tarini. And wish the Lieutenant Commanders all of the very best and fair wind for your travels around the globe. With the blessings of the entire nation, they left Fremantle on 24th November at 11 a.m., continuing their expedition. They anticipated varied weather conditions, including frontal weather systems and dropping temperatures during their passage, covering approximately 3,400 nautical miles to Littleton, New Zealand. The sea was very violent as they crossed Cape Leuwin. Crossed into the roaring 40s, their condition worsened. They began to get seasick, and rest became a luxury in the roaring 40s as they took turns keeping the boat on course. Amid such mayhem, they repaired some problems with the motor and the multifunctional display. Experiencing a sea state of 6 and wind speed gusting up to 60 knots, they braved the violent waves and reached Littleton. At Littleton, the representatives from the Maori tribe welcomed Dilna and Rupa with Maori traditional rituals. After a brief stay with diplomatic matters and boat repairs, they left Littleton on 4th January 2025. They crossed Point Nemo on 30th January 2025. This was a special moment for seafarers and mariners, as Point Nemo, also known as the oceanic pole of inaccessibility, is the point in the ocean farthest from any landmass.
They crossed Cape Horn on 15th February 2025. Traveling through this region requires exceptional navigational expertise and resilience to the harsh conditions of the Southern Ocean. The passage takes the sailors through the Drake Passage, a treacherous waterway known for its extreme winds, towering waves, and unpredictable weather. After a brief stay at Port Stanley, they continued sailing to the South Atlantic Ocean. They braved storms and dangerous seas and sailed towards their next destination. Dilna and Rupa stand the test of tides, sailing through storms and proving that the ocean, like the world, has no limits for their courage. Ladies and gentlemen, the ceremony is to commence shortly. We shall witness the arrival of our chief guest, the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, in a few minutes from now. And also, we shall witness INSV Tarini entering and coming alongside, and that is going to be shown to you on the screen through live streaming. The sequence of the program this evening is as follows, that our chief guest, the Honorable Raksha Mantri, shall be receiving the crew of INSV Tarini at the jetty when the vessel comes alongside. And once the crew has been received formally, the chief guest and the other dignitaries will join us here on the main stage. Thereafter, we shall commence with a briefing by the crew, followed by an address by the Chief of the Naval Staff and an address by the Honorable Raksha Mantri. We'll be having a brief presentation ceremony where the chief guest would be presenting special mementos to both the officers. After the presentation, we shall have the national anthem. All members of the audience will be requested to rise for the national anthem. Personnel in uniform are to salute. After the national anthem, we shall have a formal announcement for dispersal. There is a separate enclosure which has been created towards the rear side of the stand for a high tea and interaction with the Honorable Raksha Mantri, for
which all flag officers serving and retired and the mentors of the mission would be requested to join the Honorable Chief Guest for interaction over high tea. So ladies and gentlemen, we've been hearing this term circumnavigation quite frequently. Circumnavigation is a technical term, of course, going around the world, but circumnavigation over the oceans has a few criteria that need to be met. Firstly, the start and the finish point have to be the same. The crew must cross the equator for completing the circumnavigation mission and also go around the three great capes, the Cape Horn, Cape of Good Hope, and Cape Leuven. These are the mandatory requirements for your mission to be labeled as circumnavigation. I'm just waiting for Commander Abhilash Tomi. Okay. Well, we are very, very fortunate to have the presence of so many accomplished mariners here in this audience. For a lay person, I don't think they can even dream of the kind of challenges which a sailor must face in a circumnavigation mission. And just imagine, I won't drown you with data, but Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa have completed their mission sailing almost 26,000 nautical miles over a period of 8 months. It's difficult to explain to a lay person what are the conditions they faced. If you ask an ordinary person, there's rain outside, बारिश हो रही है बाहर खड़े होंगे बारिश में? Who would like to volunteer and stand in rain or in a rainstorm for 10 minutes? When it rains, life becomes inconvenient. And here you have these true brave naval officers who have completed a mission which is beyond comprehension for an ordinary person, even for a regular mariner. Today is a historic day. Genuine history is being created, not the kind of history which we watch on a daily basis on news channels. This one is genuine history. There's a request to members of the audience, then when the moment comes for a round of applause, please be generous in your applause. We would like the members of the crew as well as our dignitaries to feel the positive environment here. For those of you who are not paying attention to what I'm saying, आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ। जब तालियां बजाने का निवेदन किया जाएगा, तो लंबी सांस लेके जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी को लगना चाहिए कि वो एक विशेष समारोह में आए हैं। So ladies and gentlemen, the clock is ticking. The live streaming is about to begin. But before we commence the live streaming, here is a bit of good news and bad news. What do you want to hear first? All right. Let's begin with the bad news. Well, the bad news, ladies and gentlemen, is the income tax rates have not been lowered. Yeah, income tax rates have not been lowered. That's the bad news. But the good news is that income tax rates have not been raised. So after all, life is all about perspective. Folks, please don't look so serious, okay? As we wait for the live streaming to commence, let me tell you a bit about these two brave naval officers. Lieutenant Commander Dilna K is a graduate in commerce hailing from Calicut.
and she was commissioned into the Navy as a logistics officer 11 years back in 2014. She is an NCCC certificate holder, a medalist in national shooting championships, and has represented her state in under 19 cricket championship also. So here you have a commerce graduate, a medalist in national shooting championship, and a state level cricketer from Kerala, an achiever. She also participated in the Republic Day Parade in the Indian Navy contingent in 2015. And during her appointment at the Naval Dockyard, Visakhapatnam, Lieutenant Commander Dilna picked up sailing and then volunteered to undertake ocean passages to circumnavigate the globe and got appointed to the ocean sailing node INS Mandavi. Lieutenant Commander Dilna has already completed 38,000 nautical miles of expeditionary ocean sailing. She has a number of awards, medals to her credit, and she began her NAVIKA Sagar Parikrama Mission 2 along with Lieutenant Commander Rupa on the 2nd of October 2024. An auspicious day it was, Gandhi Jayanti, the birth anniversary of the father of the nation, to commence a mission. And Lieutenant Commander Rupa is a graduate in aeronautical engineering. Hailing from Pondicherry, she was commissioned into the Navy as a Naval Armament Inspection Officer in the year 2017. Lieutenant Commander Rupa is also a NCCC certificate holder, and she's a fitness enthusiast and was the pacer in the Western Naval Command half marathon in 2020. She was also the platoon commander of the Indian Navy contingent for the Republic Day Parade in 2018. During her subs courses, the officer picked up sailing and went on to become an avid yachtswoman and participated in command and national sailing championships, and she then volunteered to undertake the ocean passage to circumnavigate the globe and got appointed to the ocean sailing node INS Mandavi. So during this voyage of almost 26,000 nautical miles, INSV Tarini stopped and made 4 calls. The first one was at Fremantle, Australia in November 24. You heard that they were welcomed at the Parliament of Western Australia. And it's true. The world recognizes the enormous challenge which has been faced and overcome by this crew. The second port call was at Lyttelton, New Zealand in end December. The third one at Port Stanley, the Falkland Islands, in end of February. And the final one was at Cape Town in South Africa in the first fortnight of April. There have been immense challenges. We won't drown you with data and statistics at the moment. The time has come for the live streaming to commence. The live streaming has commenced.
You're now watching the flagship of the Western Fleet, INS Chennai, or a grand sight, ladies and gentlemen. And as we wait for Tarini to turn around, let me also inform you about one of the most significant achievements by the crew. INSV Tarini has become the first sail vessel to have crossed Point Nemo. And that happened on the 30th of January 2025, middle of the day at 20:30 hours, at 12:30 hours in fact. So at midday on 30 January 2025, Tarini crossed Point Nemo, which is located in the South Pacific Ocean and is referred to as the oceanic point of inaccessibility. The most remote location on planet Earth, situated approximately 2,688 kilometers from the nearest landmass. Just imagine, when you're at Point Nemo, the first touch of humanity is lying 2,700 kilometers away. And it is so far from the nearest landmass that when the vessel was at Point Nemo, the closest human beings were in space in the International Spaceship, in the space station, at the ISS. The ISS was the closest to INSV Tarini when Tarini was crossing Point Nemo. And that is a pioneering achievement because this is the first time in the maritime history of planet Earth that a sailing vessel has crossed Point Nemo.
Well, ladies and gentlemen, a lot is happening right next to the mole pier. You can see all these dinghies and windsurfers getting excited to welcome INSV Tarini, which is now navigating through her final course to come alongside. We just had two helicopters of the Indian Navy flying past to celebrate their flagon. And there she comes. Well, dear friends, we are delighted to have the family members of Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa here with us. And here's a bit of interesting information that I received yesterday. When Tarini casted off on the 2nd of October, Rupa was celebrating her mother's birthday, still having, because Rupa's mother, Srimati Kamakshi's birthday was on the 1st of October. Vaishali, you're giving me a stare. Am I correct? Thank you. Mrs. Kamakshi, could you please stand up? Let's give a round of applause for the mother of Lieutenant Commander Rupa. So look at the coincidence. Lieutenant Commander Rupa's mother, Mrs. Kamakshi, celebrated her birthday on the 1st of October, and on the 2nd of October, Tarini casted off. Today, Tarini is going to complete her mission and come alongside right next to us. And tomorrow, 30th of May, is the birthday of Mrs. Rija, the mother of Lieutenant Commander Dilna. Ladies, you've set a very, very high benchmark now. Folks on social media will like to compete with this coincidence. Mumkin nahi, possible nahi. I think a few million people will feel left out. How can we match up? They won't be able to match up. It's really, really nice to have the family members here. You see, this is something which only a mariner knows, that when you're in the deep seas, and especially when you're alone, before everything else, you have to battle loneliness. There's nobody to hold your hand, nobody to give you comfort, nobody to give you a hug, definitely nobody to bother you sending good morning messages on WhatsApp. That loneliness is the first battle. And then the endurance of staying at sea for so many weeks, so many months. People often wonder, what is the difference between seva and swarth?
Seva means service, and Swarth means having some sort of a, goal to achieve. But the fact is that in ancient times, it were those special members of human society who were driven by curiosity, who were driven by the spirit of curiosity and the spirit of service, who went out into the oceans and became adventurers. Nobody goes out into the deep ocean to try and impress somebody who's sitting 1,000 miles away. People used to go out into the deep oceans as adventurers, and eventually they became explorers, exploring new lands, exploring new routes. And that's how human society grew across the planet. And those explorers then eventually became pioneers. A lot of common people often wonder, these true brave naval officers undertook such a harsh and challenging and fearsome mission. Why? Why would anybody take this kind of a risk when we live in a technology driven, comfortable world? Well, ladies and gentlemen, I'm going to ask you a question, and I think the answer is going to be pretty clear to you. You all know the full form of AI, artificial intelligence, which is something which is being used for the benefit of humanity. There is natural intelligence and there is artificial intelligence. Okay, even the car is very excited to welcome Tarini. So there is something called artificial intelligence and something called natural intelligence. We know what is natural intelligence, but we are okay with artificial intelligence because AI is being used for the benefit of society. But when it comes to courage, what would you prefer? Genuine courage or artificial courage? I think the answer is known to all of us. And genuine courage cannot be taught. It must evolve from within. So here we have, ladies and gentlemen, the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh, who has now arrived at the venue. Well, dear friends, when the moment comes, we must acknowledge the generosity and the large-heartedness of our Honorable Raksha Mantri. Our armed forces are going through a golden era. No amount of inconvenience and weather situations could dissuade our Defence Minister from being here, because he wanted to be here personally. He wanted to be here personally to welcome and salute the crew of INSV Tarini as they accomplish their mission. Now you can see INSV Tarini on her final approach towards the jetty. Honorable Raksha Mantri is being briefed by Admiral Dinesh Tripathi, Chief of the Naval Staff. Let's see if we can zoom in a bit.
8 months at sea, 26,000 nautical miles. There comes the fly past to celebrate this golden moment. Well, ladies and gentlemen, the chopper pilots can't hear you, but let's make it symbolic. Let's give them a round of applause. Well, ladies and gentlemen, you can see the mighty Chennai and the awesome Tarini in one shot. And there you can see Lieutenant Commander Dilna. And Lieutenant Commander Rupa at the helm there.
Dilla is about to cast the rope. And the birthing party is ready on the pontoon. What a moment, ladies and gentlemen. The crew of INSV Tarini, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa receiving a standing ovation and a standing reception by the Honorable Raksha Mantri of India. Standing there in person to receive and encourage these two brave naval officers. And here they are, reporting completion of the mission to the Honorable Raksha Mantri. Well, folks, I think we need to thank the weather gods for being kind and holding on to their happiness while these golden moments happen.
Ladies and gentlemen, in a few moments from now, we shall witness the arrival of our chief guest, the Honorable Raksha Mantri. I request all members of the audience to kindly rise as a mark of respect. देवियों और सज्जनों, हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति से इस ऐतिहासिक दिवस की गरिमा उज्जवल हो गई है। A few moments as we wait for the arrival of the icons of Nari Shakti. They're due to enter the stage in a few moments from now. कहाँ पे? दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों से करें। इन दोनों के लिए और अब एक लंबी सांस लेके नारी शक्ति के प्रतीक का स्वागत करें। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। देवियों और सज्जनों, पूरा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को, हमारे समाज को नारी शक्ति का उज्जवल और पवित्र राष्ट्रीय लक्ष्य दिया और पूरा देश जानता है कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के उदार नेतृत्व में भारत की सशस्त्र सेनाओं में नारी शक्ति का उज्जवल लक्ष्य उभर रहा है। आज हमारी नौसेना के दो वीर महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने पृथ्वी की सागर परिक्रमा सफलता से पूरी की। हम सबका सौभाग्य है कि हम आज इस ऐतिहासिक सफलता के गवाह हैं। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, 6 दिन पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी? आपको याद है? नहीं याद? 10-20 दिन पहले सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देखा, क्या कमेंट्स पढ़े, न्यूज चैनल पर वो चिल्ला चिल्ली वाले डिबेट होते हैं, वो कौन से डिबेट देखे, आपको याद है? नहीं याद। लेकिन
पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, उनका नाम जरूर याद है, शेरपा टेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी। और इसी रूप में हमारी नौसेना के 2 वीर महिला अफसर जिन्होंने पृथ्वी की सागर परिक्रमा सफलता से पूरी की, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, इनका नाम और इनकी साहसी सफलता की प्रेरणा हमारे देश को और हम सबको सदियों सदियों तक याद रहेगी। और आज के ऐतिहासिक दिवस की तारीख 29 मई, 29th of May, that is the date of today। आज से 72 साल पहले 1953 में इसी दिन 29th मई को शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की सफलता प्राप्त की थी। वो तारीख थी 29 मई 1953 और आज ये ऐतिहासिक दिवस 29 मई 2025, ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, दिव्य संयोग है ये कि आज ठीक उसी तारीख 29 मई को हमारी नौसेना के वीर महिला अफसर की ये जोड़ी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने पृथ्वी की सागर परिक्रमा सफलता से पूरी की। नविका सागर परिक्रमा 2, मिशन अकम्प्लिश्ड, हिस्ट्री क्रिएटेड। दोस्तों, ऊपर बादल खुशी से गरज रहे हैं, आपको निवेदन है कि जरा तालियों का तूफान बजाइए इनके लिए। I now request members of the crew, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa, to kindly come and brief the ceremony on your mission. You'd like to speak together or one by one? Your choice, your decision. Shri Rajnath Singh, Honorable Defence Minister, Admiral Dinesh K. Tripathi, Chief of Naval Staff, Vice Admiral V. Srinivas, Commander-in-Chief, Southern Naval Command, Vice Admiral Arati Sarin, Director General Armed Forces Medical Services, Vice Admiral Vineet Makati, Controller Personnel Services, flag officers, officers, sailors, families and friends. Yes, we made it. On October 2nd, 2024, we left Goa with a lot of hope and courage for this expedition. And today, we stand here, alive and strong, together. We flew our national flag and Indian Navy's flag at every sea and land across the earth. Whenever we landed, we were greeted with cheers and care, reminded us of the goodwill we share as our Indians. We proudly represented India in the journey of this lifetime. And this was a promise I made to my father. He is no more here with me, but his presence was felt throughout the journey for me. And I'm sure that I fulfilled the promise given to him. My mother and my husband, Commander Dinesh, you both held me really strong.
and you let me fly. I wish everyone get a husband like mine. My families and friends at CA realized all that matters is you all. And Rupa, you inspire me to be more of me. And you and me, I think we can do wonders. I feel I have lived all my 7 lives in these 8 months. The world of the sea, it's the same planet, but it's a different whole world out there. I have seen the sea glow at night, the sky filled with galaxies, shooting stars, sheer darkness that brings the mind and body to peace. In this voyage, I found a friend in you and a friend in myself, who both I can trust my life with. How many people can claim that? I can. My family present here today, you have been my spine throughout my life, supporting me in all my unconventional choices. Amma, Appa, and my 2 sisters. And I dedicate this journey to you all, but this is not going to be my last. I'm sorry. There was no end to the earth or challenges in this journey. Once, in the dead of the night, while we were trying to go far from an upcoming cyclone, we had a complete navigation panel blackout in the middle of the Pacific. We lost a GPS, boat heading, wind instrument, autopilot, everything. It took us 3 hours, but it felt like an eternity to get back the systems back under control. This actually gave us a false sense of security we have on modern equipments. We saw the ocean and waves raging in anger some days, with waves as high as 20 feet tall, which was hitting us like a wave, like a wall. But we also had days where the sea was calm as a mirror, and the sea felt heavenly, and time went meaningless. And we lived through all of these in the unforgiving cold, which almost froze us. Even today, when we were inching close to the coast, the monsoon kept us on our toes. With this journey, we join the special group of people who have gone around the planet. And we haven't come across another 2 women who have done a double-handed circumnavigation. Point Nemo, the ocean's remotest location from any land, where the closest humans are in the space station. There are rarely any records of any person being at the exact coordinates of Point Nemo. Well, it's not so remote anymore for our Indians. Then there was Drake Passage and rounding Cape Horn, the Everest and every sailors, and also the nightmare. Halfway around the world, the sea humbled us and made us students again. This journey showed the entire world what Indian women are made of and what Indian Navy can do with the best training, with the best boat,
and the best mentor one can dream of. Together, we made it. But there was a point in this journey where we realized that this is not about Rupa and Dilna. This is beyond us, beyond individuals. This is an Indian dream which we were breathing and living. And we could see with us the officers and sailors who paved way for us, and aspirations of thousands of girls who dare to dream even more. So, we would like to thank all the people who were involved in this. Honorable Raksha Mantri ji, the call you made at sea when we were in the middle of the ocean, despite your busy schedule, it gave us overwhelming joy and motivation to keep going. Thank you very much. Admiral Dinesh K. Tripathi, Vice Admiral V. Srinivas, Vice Admiral Krishna Swaminathan, and Vice Admiral Vinit Makati. Sirs, you have no idea how much your words and voices motivated us and kept our Josh high. Commander Abhilash Tommy, sir, you are our inspiration. And speaking to you from the sea actually made things look easy when they weren't. And when you say it's okay, we actually felt it was okay. Thank you. INSA and OSN, they were a wind beneath the sails, powering us throughout this journey from day one till the end. The makers of the boat, what a boat you have built. Everyone around the world applauded Tarini for the professionalism. And we remembered you more than any other gods in every storm. Our initial skippers who trained us during our training, thank you so much for your patience with us. Our sailors of OSN who worked day and night to help us prepare the boat. And MOC Kochi, your calls actually made our day some days. And in MAC, we weathered all our storms together. Thank you for the weather updates. And the medical team, ma'am, you were all truly our life support at sea. Thank you. So this is our moment because we are the only naval force who has done a circumnavigation around the globe, not once, not twice, but 4 times today on an Indian-built boat. Shamna Varna, Jai Hind. Lieutenant Commander Dilna, you mentioned sailing across Point Nemo. I have a small question. A lot of members of the audience want to know. जब आप Point Nemo पे थे, जहाँ पे humanity 2,700 किलोमीटर दूर होती है, Point Nemo पे आपको WhatsApp पे good morning messages आ रहे थे? No? That day was my wedding anniversary actually. Oh wow! 30 January. 29th. Yes. So maybe I'm the only one who have celebrated the wedding anniversary in the remotest part of the world. Well, that's a very, very, difficult question to answer. You celebrated your wedding anniversary at Point Nemo, and actually your husband was feeling very low. Okay. But you didn't receive any WhatsApp messages there. So lucky.
So lucky. I now request Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Tripathi, to kindly address the audience. थैंक यू। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वाइस एडमिरल वेनम श्रीनिवास, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न नेवल कमांड, डॉक्टर वी कंडेवलू, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा, वाइस एडमिरल आरती सरीन, डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, flag officers serving and retired, most importantly Lieutenant Commander Dilna, Lieutenant Commander Rupa, our brave hearts from the Tarini crew, देवियों और सज्जनों, आज का दिन नौसेना और पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एक साहसिक और रोमांचकारी सेलिंग एक्सपीडिशन के बाद भारत लौटी हैं, जो कि उन्होंने अपनी व्याख्या कुछ मिनट पहले बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखी। मेरे अभी भी थोड़ा थोड़ा गूज बम्स हो रहे हैं यहाँ पर आपकी बात सुन के। जब आप बात कर रहे थे थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा था आंखों में। नाविका सागर परिक्रमा का यह दूसरा एडिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। सबसे पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी विमेन एम्पावरमेंट के प्रति प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत सहयोग से यह मिशन और भी मजबूत बना। और मुझे याद है वो दिन जब आपने सर इन दोनों अफसरों से बात की थी, समुद्र में थी, और आपने बोला था कि मैं आपको गोवा में जब आएंगी आप तो मैं आपका रिसेप्शन करने के लिए रहूंगा। तो सर ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो खुद की नहीं सुनते हैं फिर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना से आपकी बातचीत ने इस अभियान के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई। उस क्रूशियल फेज में आपकी बात ने इनकी हिम्मत और आत्मविश्वास को और बढ़ाया, जो कि खुद इन अफसरों ने कबूल किया। 8 महीने की कठिन यात्रा, तूफानों और चुनौतियों से जूझते हुए दोनों अफसर्स ने साहस, संकल्प और विल पावर की मिसाल कायम की है। उन्होंने पॉइंट नीमो, जब ये पॉइंट नीमो के आसपास थी 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक, आई थिंक हम लोग नेवल हेडक्वार्टर्स में, सदर्न नेवल कमांड में सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर कुछ हुआ तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, तो किस तरह से हम सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे। ये सब बातें हमारे दिमाग में उस समय घूम रही थी। लेकिन आपने तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वहां मिलाई। जैसा कि आपको पता होगा देवी सज्जनों, पॉइंट नीमो दुनिया का, मुझे नहीं पता था इससे पहले, दुनिया का सबसे रिमोट समुद्री स्थान है। उसको पार करके आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और जैसा कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने कहा कि दे हैव लिव्ड ऑल देयर 7 लाइव्स इन लास्ट 8 months। मैंने भी जब इनसे भी कभी बातचीत की, इनमें सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि अटूट समर्पण, मेहनत और जीत का जुनून देखा, जो इंडियन नेवी की पहचान है। रूपा और दिलना ने न सिर्फ नारी शक्ति बल्कि भारत शक्ति को भी एक नया रूप दिया है। इन्होंने साबित कर दिया कि अपॉर्चुनिटीज भी समंदर जैसी होती हैं, इनफाइनाइट। बस जरूरत होती है साहस और कल्पना की। आज
ये दोनों भारत की मैरीटाइम आइडेंटिटी का प्रतीक बन चुकी हैं। इनकी यात्रा ने इंटरनेशनल स्तर पर भी भारत की प्रेजेंस और मैरीटाइम अवेयरनेस को मजबूत किया है। इस एक्सपीडिशन के दौरान इन दोनों अधिकारियों ने विदेशों में कई लीडर्स, सांसदों और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की और ग्लोबल स्टेज पर एक रिसर्जेंट भारत का संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया, फॉकलैंड आइलैंड्स और केप टाउन के लेजिस्लेटिव सेशंस में भी भाग लिया और अपने एडवेंचरस किस्सों से कई देशों के बच्चों और स्टूडेंट्स के दिलों में समुंदर के प्रति रोमांच की भावना और जज्बा भी भर दिया। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान कहा था, When women prosper, the world prospers। यह यात्रा उसी सोच का सजीव उदाहरण है। इस अभियान ने साइंटिफिक रिसर्च में भी वैल्यूएबल योगदान दिया है, सी वाटर सैंपलिंग से लेकर मरीन लाइफ स्टडी तक। मैं डिफेंस फूड रिसर्च लैब का भी आभार करता हूं, जिन्होंने कस्टमाइज्ड इंडियन मील्स से समंदर में भी घर जैसा खाना उपलब्ध कराया। लेफ्टिनेंट कमांडर्स दिलना और रूपा के परिवार जो यहां प्रेजेंट हैं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ और सपोर्ट के बिना यह सफर संभव नहीं हो सकता था। It is thanks to your that, as Lieutenant Commander Dilna said, they have braved through countless challenges with conviction and ease. साथ ही नेवल हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ एडवेंचर, फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, सदर्न नेवल कमांड, ओशन सेलिंग नोट, mentors like Commander Vilas Tommy, ट्रेनर्स, मेडिकल स्टाफ और सभी सहयोगियों को भी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, आपने जो तिरंगा दुनिया भर में लहराया है वो आज और ऊंचा फहरा रहा है। आप दोनों ने सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि 146 करोड़ भारतीयों का सीना और चौड़ा कर दिया है। Undoubtedly, you have lived a dream. May you continue to dream bigger and inspire many more girls and youngsters to dream, to live that dream and make India prouder. देवी और संजनों, अंत में मैं हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एक बार फिर आभार एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है आपने अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच यहां पर आकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए हमारे दोनों ऑफिसर्स का मान बढ़ाया। थैंक यू देवी और सज्जनों, जय हिंद। Ladies and gentlemen, the mission NAVIKA Sagar Parikrama 2 began on a very auspicious day. श्रीमान गांधी जयंती का दिवस था पिछले साल, और उसी दिन हमें गांधी जी के वचन हमारी आंखों के सामने उभर गए। Be the change you wish to see in the world. And ladies and gentlemen, the whole world knows that the Indian Navy is leading the change. The Indian Navy is recognized and respected globally as a progressive, positive, and a stellar organization. Thanks to the visionary foundations anchored by our senior veterans, and thanks to the dynamic and resolute leadership of our Navy, the Indian Navy is at the forefront of achieving India's national objectives.
And you want to see the confidence? The ultimate confidence is the smile that we are seeing on the faces of Lieutenant Commander Dilna and Rupa. 8 महीने की वॉयज के बाद वापस आए हैं 26,000 मील की दूरी तय करके, और इनके चेहरे पे आत्मविश्वास की मुस्कान। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of Naval Staff, Chief Secretary Goa, DG Armed Forces Medical Services, Vice Admiral R.T. Sareen, Vice Admiral V. Srinivas, FOC&C, Southern Naval Command, Lieutenant Commander Dilna K, Lieutenant Commander Rupa K. Government of India, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स, सेलर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए का भारत के रक्षा मंत्री के रूप में मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। Only I am not proud of you. The whole country is proud of you both. और इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए आप लोगों को विशेष मैं बधाई देता हूं। आपने जो करिश्मेटिक का यह काम किया है वो आपकी एक अचीवमेंट तो यह है ही, लेकिन वह एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, एक मेजर अचीवमेंट है इस राष्ट्र की। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सूर्य हमारी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन एक तरह से पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पराक्रम आपने दिखाया है, उसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। आज मैं बेहद गर्व के साथ यह कह सकता हूं, आप दोनों सिर्फ अर्थ के चारों ओर ही नहीं घूमे, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में भी आप घूमे हैं। लगभग 25,000 नॉटिकल माइल यानी 43,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी का सफर, 8 महीने का लंबा समय, वह भी समुद्र के थपेड़ों के बीच रहकर गुजारना अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बहादुरी है। और इस पूरी यात्रा में जिस अकेलेपन को आपने महसूस किया है, उसको तो सचमुच शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। यहां लोग इंसानों के बीच रहकर भी अकेलापन कई बार महसूस कर लेते हैं, और आप लोग तो एकदम निर्जन समुद्र में, जहां दूर दूर तक आपको इंसान तो छोड़िए जानवर तक देखने को नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में आपने 8 महीने गुजारे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस दौरान आपको ढेर सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज देखकर आप दोनों को मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की फिजिकल अथवा मेंटल प्रॉब्लम आपको 8 महीने के दौरान रही होगी। लेकिन आखिरकार आपने सिद्ध किया है कि सचमुच आप हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं। आपने यह सिद्ध किया। तमाम चैलेंजेस को पार पाते हुए आपने इस मिशन को सक्सेस दी है, इस मिशन को आपने सफल बनाया है। जो साहस आप लोगों ने दिखाया है वह सिर्फ हमारी नेवी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरी मानवता के लिए अपने में एक मिसाल है, अपने में एक एग्जाम्पल है। और यह एग्जाम्पल इसलिए भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हमारी बेटियों द्वारा किया गया है। हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है। साथियों, हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से
भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है। उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और एनडीए से इसी महीने 17 गर्ल्स ने पास आउट भी हुई हैं। साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैं इन दोनों बेटियों के बारे में कहना चाहता हूं, इन दोनों बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने तरीके से देश का सम्मान बढ़ाया है। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने दोनों से बात की थी और आप दोनों उस समय समुद्र में थी। उस समय बात करते हुए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मेरी भावनाएं थीं, सिर्फ मेरे इमोशंस थे। आज भी आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिता अपनी बेटियों से मिल रहा है। आज भी इनकी मौजूदगी में इनसे बात करते हुए मेरे पास शब्द नहीं हैं, केवल भावनाएं हैं, वर्ड्स नहीं हैं, केवल मेरे पास इनके लिए इमोशंस हैं। उस दिन जब आप समुद्र में थी तो मेरे लिए ऐसा क्षण था जैसे किसी पिता के घर से उसकी बेटियां विदा हो रही हों। और आज जब आप इस जर्नी को पूरा करके लौट आई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो बेटियां वापस अपने मायके में आ गई। एक की तो शादी हो गई है, दूसरी अभी बाकी है। अब तुम्हारी जब शादी होगी तब मैं उस शादी में भी शिरकत करने के लिए आऊंगा। और इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी शादी कर डालो। और आपको याद होगा जब आप दोनों समुद्र में थी तो मैंने कहा था मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं और जब आप यहां दोनों वापस लौटेंगी तो मैं खुद आकर आपका स्वागत करूंगा। और अपना वह वादा पूरा करने के लिए मैं आज आप सबके सामने इस गोवा में मौजूद हूं। मानव, मनुष्य और दूसरी स्पेसीज जो होती हैं में कई प्रकार के अंतर होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख अंतर एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर का होता है। दूसरी कोई भी स्पेसीज इस तरह से एडवेंचर्स नहीं कर सकती है। नेचर को एक्सप्लोर करना यह मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मैं यहां नेचर पर विजय पाने की बात नहीं कर रहा हूं। नेचर विजय की कोई वस्तु है ही नहीं, आप उस पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। नेचर तो जानने और समझने की एक वस्तु है। वह नेचर चाहे बाहर का हो या फिर आपके अंदर का हो, उसको जानना और समझना ही मैं मानता हूं ये मनुष्य का धर्म है। और जैसे जैसे आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि जो हम में है वही नेचर में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। दोनों बेटियों ने नेचर को एक्सप्लोर किया है। एक तरह से कहें तो आपने मानव का धर्म भी निभाया है।
इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रोजाना नहीं हुआ करते और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। इसके लिए जो ग्रिट चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसे आसानी से हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे ही प्राप्त होता है। और आप दोनों बेटियों के ऊपर मैं समझता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि जिस स्पिरिट के साथ आपने इस जर्नी को पूरा किया है, उसी स्पिरिट के साथ आप इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन भी करिए। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। और इस यात्रा के दौरान आपके जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, उसे ऑडियो, वीडियो या फिर राइटिंग के द्वारा कहीं पर आप दर्ज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे इंस्पायर हो सके। आप लोगों की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। यह हमारे यूथ को, खासकर हमारी बेटियों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और एक बात यह भी है कि आपकी यह जर्नी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि इंडियन नेवी के सामूहिक प्रयासों की सफलता को भी दर्शाती है। आपके इस पूरे एक्सप्लोरेशन के पीछे इंडियन नेवी के न जाने कितने कर्मचारियों का, कितने अधिकारियों का योगदान रहा है। आपके इंस्ट्रक्टर्स का, आपकी टेक्निकल टीम का, नेवी के रिसोर्सेस का, इन सब के मिक्स्ड एफर्ट से ही यह जर्नी पूरी हो पाई है। मुझे बताया गया कि आप दोनों एनसीसी कैडेट रहे हैं, मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं। इसके अलावा नौसेना में शामिल होने से पहले कमांडर दिलना नेशनल लेवल की शूटर भी रही हैं और अंडर 19 राष्ट्रीय नेशनल लेवल की क्रिकेटर भी रही हैं। दोनों, शूटर एंड क्रिकेटर बोथ। और कमांडर रूपा भी नेवल आर्मामेंट स्पेशलिस्ट रही हैं। बचपन से ही आप दोनों टैलेंटेड रही हैं और आपने कई अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। जब आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में आज से एक और अचीवमेंट्स जुड़ गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश के बाहर आप जहां भी गई, वहां पर आपका वार्म वेलकम किया गया। भारतीय प्रवासियों ने भी दिल खोल कर इन दोनों बेटियों का स्वागत किया है। इसके अलावा अलग अलग देशों के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इनका भव्य स्वागत किया है। गोवा से जो आपकी यात्रा शुरू हुई थी, वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस गोवा में आकर पूरी हुई है। भारत से बाहर निकलकर आपने एक तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम ही नहीं फहराया है, बल्कि भारत का परचम आपने पूरी दुनिया में फहराया है। मैं एक बार फिर आप दोनों को इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं और आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भविष्य में और भी नए रिकॉर्ड स्थापित करें, नए कीर्तिमान स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है और इस सच्चाई को मानती है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश प्रेम, मर्यादा और शक्ति का प्रतीक हैं। श्रीमान, आपके नेतृत्व में भारत की सेनाएं एक सुनहरे युग से गुजर रही हैं। जब आप किसी भी सैन्य समारोह को संबोधित करते हैं तो आपके कथन और आपके वचन हमारे दिलों में समा जाते हैं। आपने हमारे सैनिकों के मन में इतना आत्मविश्वास और मनोबल जागृत किया है कि हमारे देश का हर सैनिक आपको परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में देखता है। देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को सम्मानजनक तालियों के साथ आभार व्यक्त करें।
I now request the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to kindly present a special memento to members of the crew of INSV Tarini, a special सम्मानजनक तालियों के साथ आभार व्यक्त करें। I now request the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to kindly present a special memento to members of the crew of INSV Tarini, a special Well, ladies and gentlemen, you can see the mighty Chennai and the awesome Tarini in one shot. And there you can see Lieutenant Commander Dilna. And Lieutenant Commander Rupa at the helm there. Dilna is about to cast the rope. And the berthing party is ready on the pontoon. What a moment, ladies and gentlemen. The crew of INSV Tarini, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa receiving a standing ovation and a standing reception by the Honorable Raksha Mantri of India. Standing there in person to receive and encourage
these two brave naval officers. And here they are reporting completion of the mission to the Honorable Raksha Mantri. Well, folks, I think we need to thank the weather gods for being kind and holding on to their happiness while these golden moments happen. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, we shall witness the arrival of our chief guest, the Honorable Raksha Mantri. I request all members of the audience to kindly rise as a mark of respect.
देवियों और सज्जनों, हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति से इस ऐतिहासिक दिवस की गरिमा उज्जवल हो गई है। A few moments as we wait for the arrival of the icons of Nari Shakti. They're due to enter the stage in a few moments from now. कहाँ पे? दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों से करें। इन दोनों के लिए और अब एक लंबी सांस लेके